Good morning, everyone. So, in the last class, we studied about force of friction, the factors affecting friction, and the causes of friction. So, let's start today class with advantages and disadvantages of friction. So, what is basically friction? Friction is a force that opposes the motion. Okay, friction जो है, it is a type of force, contact force that acts between two objects, and it always acts in opposite direction to the direction of motion. Okay, so let's start with advantages. What are the advantages of friction? First, friction helps us to walk. How? With the help of friction only, we are able to walk. If there is no friction, we may slip. Like if we step on banana peel, okay, then what happens? We may slip because there is less friction, in no friction, due to which we may get slip. So friction help us to walk. Okay, यहाँ you can take one more example. अगर फ्लोर पे ऑयल स्पिल किया हुआ हो, अगर ऑयल गिर जाए फ्लोर के सरफेस पे, and if we step on it, so what will happen? We may slip. Why we may slip? Because there is less friction. Okay, so these are the things that are reducing the friction, and it is harmful for us as we will not be able to walk and we may slip. So friction is necessary to walk. It helps us to walk, and it helps us to write also. How? Agar friction, when you write in your notebook, when you write in your notebook, frictional force acts between your pencil and the notebook surface. Okay, and then you are able to write. If there is no friction, your hand may get slip. आपका hand जो है वो slip हो जाता रहेगा बार बार, and you won't be able to write. So friction also help us to write. You can take one more example, like in the case of whiteboard. Whiteboard का surface जो है, that is very smooth as compared to the blackboard, and there is white surface smooth है, whiteboard smooth है, so there is less friction. Due to less friction, it is difficult to write over there, and blackboard पे जो है वो easily write हो जाता है because there is a friction. जितना surface smooth होगा, friction less होगा, and it is difficult for us to write. So first advantage is friction help us to walk and to write. Okay, second point, the friction between the tires of the car and road enables the car to move forward without skidding. Now on the road कितने vehicles जो है move करते हैं, ठीक है, तो there is a frictional force between the tires of the vehicles and the road. तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तभी जो है आपके व्हीकल्स जो है वो ऑन रोड जो है वो मूव कर पा रहे हैं. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो व्हीकल्स या कार जो है वो स्किड कर सकती है. सो फ्रिक्शन between the tires of car and road help the car to move, okay, and without skidding. Okay, so third point, friction helps to hold the things. Friction helps to hold the thing. Suppose you are holding a glass, आपने glass पकड़ा हुआ है, there is a friction between the glass and your hand surface. If there is less friction, suppose oil मैंने बाहर लगा दिया, the outer covering of the glass is covered with the oil, उसको layer लगा दी, and then you hold the glass. So क्या होगा? Glass may slip from your hand, it may fall, down, and it may get break also. So frictional force जो है, it is also helpful in holding the thing. Okay, so these are the advantages of friction. Okay, now second, disadvantages. What are the disadvantages? Friction produces heat. How can you say that friction produces heat? Friction, you rub your hands, आप अपने hands rub करेंगे, तो sliding, आप hands को slide कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, one hand is sliding over the another, so उस case में rubbing से friction, मतलब sliding friction है, and when you will observe, you will feel warm. आपको hot feel होगा, आपको warm feel होगा. Why? Because due to sliding friction it produces heat. ठीक है, हीट की वजह से लॉसेस ऑफ एनर्जी भी होता है. सो फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट दैट कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी. ओके,
Shoes wear out slowly. आपने देखा होगा, you have grooves on the soles of your shoes. Shoes के नीचे जो है वो soles पे grooves होते हैं. डिजाइन होता है ना, zigzag बना होगा या किसी भी तरीके का पैटर्न होता है, तो दे आर कॉल्ड grooves. ठीक है. सिमिलरली जो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव grooves. ज्यादा जब चलते हैं तो व्हाट हैपन, वो grooves जो है, वो सरफेस जो है, इट बिकम फ्लैट, तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. ठीक है. So why it happens? Due to the friction only. Okay. The shoes wear out slowly. Tires of vehicle wear out gradually. It is due to the friction only. Okay. Fourth point, friction reduces the motion of moving parts of machine. Machine के parts जो है कई बारी जाम हो जाते हैं. They do not move at all. So why it happens? उनका motion जो है वो reduce हो जाता है. Why? Because of friction. Okay. So these are the advantages and disadvantages of friction. Okay. So the next comes increasing and decreasing friction. How can you increase friction? How can you decrease friction? What are the basic applications जिसमें हम ये देख रहे हैं कि friction increase होना चाहिए या decrease होना चाहिए? So first of all, soles of shoes have grooves. अभी I discussed कि जो shoes के soles होते हैं, they have grooves. Why? So that they have better grip. Grip जो है ground पे better हो, इसीलिए वो pattern जो है डिजाइन किया जाता है soles पे. तो धीरे धीरे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. फ्लैट होने की वजह से फ्रिक्शन रहेगा नहीं, एंड उन स्लीपर्स से या उन शूज से यू मे स्लिप इजीली. सो सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स. व्हाई दे हैव ग्रूव्स? टू इंक्रीज फ्रिक्शन. Why to increase friction? Why do we want to increase the friction in that case? Because to have a better grip on the ground. Okay. So second is, gymnast apply some coarse substance on their hand. Coarse means मोटा सा कुछ powdery substance होता है. They use it is not actually means, coarse substance means मोटा कुछ material होता है, very thick material they apply on their hands. Why they apply on their hands? To have a better grip. To have a better grip means to increase the friction. Okay. And third point, we sprinkle fine powder on the carom board. कैरम बोर्ड के ऊपर हम फाइन पाउडर भी स्प्रिंकल. व्हाई? सो दैट स्ट्राइकर जो है वो इजीली कॉइन्स को स्ट्राइक कर सके, इजीली वो स्लाइड हो जाए. ठीक है. इजीली कब स्लाइड होगा? व्हेन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज. So in the third point, we are decreasing the friction by sprinkling powder on the carom board. Okay. We are decreasing the friction so that striker can easily move and strike the coin. Okay. Fourth point, few drops of oil are poured on the hinges of a door. अब door hinges means जो you can say कब्जे हिंदी में बोलते हैं. तो उन डोर के जो hinges होते हैं, we used to put the oil drops over there when it is not moving at all, और कई बार sound produce करता है उसको when we open the door and when we close the door. So what we do? We put oil. ठीक है. Why we put oil? To reduce friction. Friction reduce होगा and it can move easily. Okay. Fifth point, mechanic uses grease or oil between the moving parts of machine. Machines के जो moving parts होते हैं, जो move करते हैं between two parts, कोई भी movement है तो उसमें oil and grease डाला जाता है, mechanic डालते हैं. या you can observe साइकिल की chain में ग्रीस और ऑयलिंग की जाती है. Why? Because उसको मूव करना है, फ्रिक्शन रिड्यूस होना चाहिए, तभी तो वो इजीली मूव करेगी. ओके. So to decrease the friction over there so that it can move easily. Okay. Motion जो है वो बिल्कुल smooth हो जाए. So the substances that reduces the friction like oil, grease, and we can say smooth surface, polished surface. So these are polishing. So these are the substances. Polish हो गया, grease, oil, smooth surface. They reduces the friction. So substances that reduce the friction, they are called lubricants. What are they called? Lubricants. Okay. One more thing is there, wheels.
Wheels also reduce friction. How? Suppose a heavy suitcase is there. ये tires नहीं है इनके. Suppose in the first case, suitcase has no tire, कोई टायर नहीं है इनका, ठीक है, एंड यू हैव टू स्लाइड इट. जब आप इसको स्लाइड करेंगे, in first case you are sliding this suitcase without the wheels, and in the second case if there are tires and you are sliding the suitcase, in which case it would be easy for you, जहाँ मोशन इजी रहेगा, स्लाइड करेगा इजीली, जो है आपका मोशन में आ जाएगा सूटकेस. ऑब्वियसली इन द केस ऑफ व्हील्स ओनली, जब व्हील्स होंगे तभी सूटकेस जो है वो आपका इजीली मूव करेगा. ओके, व्हाई? बिकॉज व्हील से जो क्या हुआ, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया. ओके, सो व्हील जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. जितने भी स्ट्रॉलर्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, नाउ दे हैव व्हील्स अंडर इट to so that their motion can be they can move easily. Okay, उनको handle करना easy रहेगा. And you can do one more activity at your home. What you can do, अब जो है you can take 3 or 4 pencils, cylindrical pencils, or you can take sketch pens. ओके, आप उसके ऊपर एक नोटबुक रख दीजिए. आप नोटबुक को टेबल के ऊपर रख के ऐसे स्लाइड कीजिए, एंड इन सेकेंड केस उसको नोटबुक को स्केच पेन के ऊपर रख के एज आई हैव शोन इन द फिगर, देन मूव इट. तो इस केस में व्हेन द पेंसिल्स आर देयर, दे आर रोलिंग, तो इस केस में बुक जो है वो आपकी इजीली मूव कर जाएगी. इट विल मूव वेरी इजीली. ओके, बिकॉज दिस इज रोलिंग. ओके, सो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, लाइक हियर, यहाँ पे एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है वो कम है. एंड जितना भी फ्रिक्शन लग रहा है, जितना भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन. Okay, and in the last class we discussed that static friction is always greater than sliding friction, and now you can say that sliding friction is greater than rolling friction. So rolling friction की value is least, okay, and static friction is maximum. Its value is maximum. Okay, next is ball bearing. What do you mean by ball bearing? We can see it in cycles and in fans. ठीक है, फैंस में भी ये बॉल बेयरिंग्स होते हैं. व्हाट एक्चुअली क्या हेल्प करते हैं? बॉल बेयरिंग्स आल्सो हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. एक रिंग होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिंग, सी द आउटर रिंग, एंड इट कंटेन्स मेनी मेटल बॉल्स. ओके, दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ओके, the next topic is fluid friction. What do you mean by fluid? Fluid means that can flow easily. Substances that can flow easily. कौन सी चीजें easily flow करती हैं? Liquids can flow, gases can flow. So these are called fluid. Okay. So these liquids and gases, they also exert frictional force on the object. Okay, and that friction exerted by fluid, means liquid and gases, is called fluid friction. And there is one more, another term for the fluid friction, that is drag. D-R-A-G, drag. Okay, now your fluid friction depends on the speed of object and shape of object. How? You have seen कि जो ships होती हैं, fishes, birds, उनको तो रहना ही पानी में है या हवा में है, तो उनको फ्रिक्शनल फोर्स उनके ऊपर एवरी टाइम इट इज एक्टिंग ऑन इट. सो अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको ओवरकम करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ एनर्जी, देयर बॉडी शेप इज सच दैट कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी का लॉस ज्यादा नहीं होता. वो कौन सी शेप है? स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन, thick from the center and thin from the edges. Okay, birds also have streamline shape. Why? Because उनको friction जो है उनको कम experience करना पड़ता है, and it helps them to fly easily. And similarly fish की shape भी, they are also having streamline shape. Ships also have streamline shape. Why? Because when they float, when they swim, when they float in the water, तो उस शेप को
फ्रिक्शनल फोर्स कम एक्सपीरियंस करना पड़ता है एंड इट हेल्प्स देम टू मूव इजीली टू क्लोज इजीली. ओके. एंड सेकंड इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ओके. So shape is designed in such a way. Okay. So with this, students, this chapter gets over. Watch the videos carefully. And अगर एक बार में समझ नहीं आता है, try to watch the video once or twice. Okay. And thank you and have a nice day. Okay class. Thank you.